Welcome back, students. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to solve the exercise of related to the topics general term and general term of binomial expansion and middle term of binomial expansion. जो आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। पिछले 2-3 दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, मिडिल टर्म कैसे हम करते हैं इसको। सो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस y रेज्ड पावर 6। इट इज क्वेश्चन नंबर 3। यू हैव टू फाइंड जनरल टर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस y रेज्ड पावर 6। सो आपको क्या करना है बेटा, आपको इसकी जनरल टर्म निकालनी है। वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज t of r plus 1 is equal to ncr a raised power n minus r into b raised power r। बट यहाँ पे n के बदले क्या है, n के बदले है 6। सो यू कैन राइट इट इज t of r plus 1 is equal to 6cr। a के बदले क्या है x स्क्वायर होल रेज्ड पावर 6 minus r इंटू बी, बी के बदले क्या है माइनस वाई रेज्ड पावर आर। सो जनरल टर्म क्या आएगी यहाँ पे, जनरल टर्म इज टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल 6cr एक्स रेज्ड पावर 24 नहीं 2 6 12 minus 2r into y minus y raised power r। दिस इज द जनरल टर्म। वैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस yx रेज्ड पावर 12। आपको इसकी जनरल टर्म निकालनी है। सो यू कैन फाइंड द जनरल टर्म बाय वी कैन राइट हियर जनरल टर्म इज टी ऑफ r प्लस 1। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही लिखूंगा। सो इट इज 12 n इज हियर 12 cr x square whole raised power 12 minus r into minus yx raised power r। So जनरल टर्म क्या आएगी बेटा, t of r plus 1 is equal 12 cr। ये जो x square है इसको मल्टीप्लाई करेंगे because we know that by law of exponents and radicals x raised power m whole raised power n is always equal to x raised power mn। So it is x raised power 2 12s are 24 minus 2r into minus y raised power r into x raised power r। अब यहाँ पे we know that in multiplication when bases are same powers are added। यहाँ पे x raised power 24 minus 2r and x raised power r। So we can write it as t of r plus 1 is equal to 12cr x raised power 24 minus 2r plus r, that is minus r into minus y raised power r। This is the general term. This is the general term of this binomial expansion। तो बेटा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको वहां से एक्सपेंशन दिया गया है तो एंड यू हैव टू फाइंड द टर्म, यू हैव टू फाइंड द फोर्थ टर्म in the expansion of x minus 2y raised to power 12। It is question number 5। So question number 5 is you have to find fourth term in the expansion of x square minus 2y whole raised to power 12। You have to find the fourth term, question number 5, you have to find the fourth term in the expansion of x minus 2y whole raised to power 12। You have to find fourth term, we have to find here fourth term। So in order to find the fourth term we must use first here what is the general term of this binomial expansion। So general term is t of r plus 1 is equal to 12cr x raised to power 12 minus r into minus 2y whole raised to power r, and you need to find the fourth term। तो t of r plus 1 ये कब t4 बनेगा, t of r plus whenever r plus 1 is equal to 4 means whenever r is equal to 3। So we can put here, put r is equal to 3, you can find t of 3 plus 1 which is 4, t4 means t4, t subscript 4 it denotes, this subscript always denotes the term number, so it is a fourth term। So this fourth term will be 12
C3 r के बदले 3 है x रेज्ड पावर 12 minus 3 into minus 2y raised power 3. So it is 12C3 x raised power 9 into minus 2 raised power 3 into y raised power 3. So you can write here 12C3 x raised power 9 into minus 2 raised power 3, that is minus 8, minus 2 raised power 3, that is minus 8 into y cube. So you can find 12C3 into minus 8 x raised power 9 into y cube, and this 12C3 it is equal to 220 into minus 8 into x raised power 9 y cube, that is minus 1760. 220 into 8, it is always equal to minus, it is equal to 1760 x raised power 9 y cube. This is the fourth term of this binomial expansion. This is the fourth term of this binomial expansion, means x minus 2y raised power 12. जो इसकी binomial expansion होगी जिसमें 13 terms होंगे, उसकी जो fourth term होगी इसकी fourth term होगी. So with the help of this general theorem, with the help of this general term of binomial expansion, you can find any term of the binomial expansion. ठीक है बेटा. अब next इसमें है जो इसका next question है, that is middle term. What is the middle term? मिडल टर्म पे हमने कल बात की थी, मिडल टर्म पे हमने थोड़ी बात की थी कल कि मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं बेटा. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड द मिडल टर्म ऑफ, इट इज क्वेश्चन नंबर, perhaps it is question number 7. You have to find middle term of 3 minus x cube divided by 6 whole raised power 7. ये जो बाइनोमियल है, इसकी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें 8 टर्म्स होंगे. तो आपको क्या करना है बेटा, आपको मिडिल टर्म निकालनी है. मिडिल टर्म में भी 1 और इट में भी 2. मिडिल टर्म्स में हमने क्या देखा कि जब कल हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशंस में हमने देखा था कि इफ ए binomial expansion has two middle terms, then their binomial coefficients are always equal. जो दो मिडल टर्म्स होंगे उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल होंगे. दूसरी बात है कि जो मिडल टर्म होती है जिसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा होता है. बाइनोमियल एक्सपेंशन में जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं तो वो मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है. तो ये दो ऑब्जर्वेशन हमने देखी थी. तो यहाँ पे क्या है बेटा, हियर n is, it depends, we know that middle term of a binomial expansion depends on this n, depends on this power. So we can write, in order to solve this question, we can write here n is equal to 7, and which is odd. Therefore, number of terms in the expansion are, number of terms in the expansion are 8, which are even. Thus, this binomial expansion has two middle terms. तो बेटा कितने मिडिल टर्म्स होंगी, दो मिडिल टर्म्स. हमने कल पढ़ा है whenever n is odd, whenever this power exponent is odd, so मिडिल जो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन उसमें इवन टर्म्स होंगे, because odd plus 1 is even, so इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. सो मिडिल, इसमें दो मिडिल टर्म्स होंगी. वो दो मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होंगी, एक तो होगा n plus 1 divided by 2th term and n plus 3 divided by 2. These are the two middle terms. अब n क्या है यहाँ पे, 7. 7 plus 1 divided by 2, that is 8 by 2, that is fourth term, and n 7 plus 3, n plus 3, 7 plus 3 divided by 2, and fifth term. So these are the two middle terms. A fourth term, fifth term you can calculate with the help of this fifth term. आपके पास binomial है, you can find T4, and T4 is equal to 7C3. 3 raised to power 7 minus 3, that is 4, into minus x cube divided by 6 whole raised to power 3. And T5, fifth term will be
again 7c4 into fifth term 7c4 into 3 raised power, यहाँ पे देखिए बेटा आप 7c t4 is 7c3 and t5 is 7c4. अब ये जो क्या आएगा यहाँ पे 3 raised power 7 minus 3 raised power 7 minus 4 that is equal to 3, which is minus x cube divided by 6 whole cube. So these are the two middle terms. First middle term will be 7c3 3 raised power 4 in minus x cube whole cube divided by 6, and 7c4 3 raised power 3 minus x cube divided by 6 whole raised power 3. These are the two middle terms. Now you can calculate these 7c3 7c4 and this, and you can find this 7c3 and 7c4 3 raised power 4 3 raised power 3, they are always equal. They are always equal. So you can say the binomial, here the middle terms are 2, so their binomial coefficients are equal. These are the binomial coefficients. These are the binomial coefficients. ये इक्वल होंगे और इसके मिडल टर्म्स होंगे. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 का 8 जो इसका मिडल टर्म है वो वैसे ही जो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप कर सकते हो बेटा, इजीली कर सकते हो आप. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यू हैव टू prove that the coefficients of a raised power m and a raised power n in the expansion of 1 plus a raised power m plus n are equal. करना क्या बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करके रखिए आप बेटा. क्वेश्चन क्या है? prove that the coefficients of a raised power m and a raised power n in the expansion of 1 plus a raised power m plus n are equal. क्या करना है, क्या दिखाना है बेटा आपको? जो ये बाइनोमियल है 1 प्लस ए रेज पर m प्लस n, जिसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन होगी a रेज पर m और a रेज पर n के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो इक्वल होंगे. सो प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे we know that t of r plus 1 means what is the general term of this 1 plus a raised power m. अगेन वही जनरल टर्म का कंसेप्ट आ रहा है बेटा. 1 प्लस a रेज पर m प्लस n का जो जनरल टर्म क्या होगी, इसकी जनरल टर्म होगी m प्लस n c r 1 raised power m plus n minus that is 1 into a raised power r, because 1 raised power m plus n minus r that is again 1. So here जनरल टर्म क्या है बेटा? यहाँ पे t of r plus 1 is m plus n c r a raised power r. अब ये जो जनरल टर्म है इससे आप कोफिशिएंट निकाल सकते हो बेटा. देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a raised power m. अब कोफिशिएंट ऑफ a raised power m क्या होगा? m plus n c m. ये इसका कोफिशिएंट होगा. कोफिशिएंट ऑफ a raised power n. a raised power n का कोफिशिएंट क्या होगा? If we replace r by n, so we can find here m plus n c n. यहाँ पे m plus n c m है, यहाँ पे m plus n c n है. शायद आप सोचते होंगे कि नहीं कोफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल, बट आई विल शो यू हाउ दे आर इक्वल. m plus n c m is equal to m plus n c n. How it is equal? We have a property. We know that n c r is equal to n c n minus r. n minus r. This is the property of combinations. And ये मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिखाया बेटा. NCR is equal to NCN minus R. अगर हम यही फार्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे तो m plus n c m क्या आएगा फिर? It will be m plus n c m plus n minus m means NCR is equal to NCN minus R. तो यहाँ पे क्या आया? m plus n c m is equal to m plus n c m plus n minus m. Now minus m plus m cancel, it is m plus n c n. Therefore
m plus n c m is equal to m plus n c n. Thus the coefficients of a raised power n and a raised power n in the expansion of 1 plus a raised power m plus n are equal. ठीक है बेटा. अब इसका जो एक और क्वेश्चन है, there is one more question of this exercise, that is it is question number 11. क्वेश्चन नंबर 10 आप ऐसे ही कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसे ही इजी क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है. आपको करना क्या है बेटा, आपको करना क्या है, you have to prove the coefficient of x raised power n in the expansion of 1 plus x raised power 2n is twice that of coefficient of x raised power n in the expansion of 1 plus x to raised power n to 1 plus x raised power 2n minus 1. क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा. हमें दिखाना क्या है, ये बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ x raised power n in 1 plus x raised power 2n, it is equal to, we have to show this coefficient of x raised power n in expansion of 1 plus x raised power 2n is equal to twice the coefficient of x raised power n in the expansion of 1 plus x raised power 2n minus 1. बेटा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, आप टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हो. कोफिशिएंट ऑफ x raised power n in the expansion of 1 plus x raised power 2n is equal to the twice the coefficient of x raised power n in 1 plus x raised power 2n minus 1. ये हमें दिखाना है. तो बेटा प्रूव करने के लिए we will take we'll write coefficient of, we'll first find coefficient of x raised power n in 1 plus x raised power 2n minus 1. We'll first find the coefficient of x raised power n in 1 plus x raised power 2n minus 1. So we'll first find the coefficient of x raised power n in 1 plus x raised power 2n minus 1. तो इसका coefficient क्या आएगा? So first of all we'll find the general term here. So general term क्या आएगी? t of r plus 1 is equal to 2n minus 1 cr x raised power r. Therefore coefficient of x raised power n is here 2n minus 1 cn. इसका coefficient है. Now we will try to find the value of 2n minus 1 cn. Therefore 2n minus 1 cn is equal to 2n minus 1 whole factorial divided by n factorial into 2n minus 1 minus n whole factorial. That is, it is equal to 2n minus 1 whole factorial divided by n factorial into 2n minus 1 minus n, 2n minus n, that is n, into n minus 1 whole factorial. This is the coefficient of x raised power n. This is the coefficient of x raised power n in the binomial expansion of 1 plus x raised power 2n minus 1. Now we will try to find the coefficient of x raised power n in this. Now to find coefficient of x raised power n in 1 plus x raised power 2n. So here इसकी जो जनरल टर्म होगी t of r plus 1 is here again. It is t of r plus 1 is again. It is 2n cr x raised power r. Therefore coefficient of x raised power n is 2n cn. Now to find 2n cn, what is the value of 2n cn? 2n cn, it is 2n cn is equal to 2n factorial divided by n factorial into 2n minus n whole factorial, which is 2n factorial divided by n factorial into 2n minus n whole factorial into n factorial. Now we can write it as this 2n whole factorial can be written as 2n into 2n minus 1 whole factorial divided by ये जो n factorial, this can be written as n into n minus 1 whole factorial into n factorial. Now we can write it as
this n cancel, so here it is twice 2n minus 1 whole factorial divided by n minus 1 whole factorial into n factorial. तो बेटा क्या है यहाँ पे, इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, सॉरी जो इसकी वो जो द कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर n इज हियर ट्वाइस 2n minus 1 whole factorial divided by n factorial into n minus 1 whole factorial. अगर आप यही देखोगे बेटा, it is 2n minus 1 whole factorial divided by n factorial into 2n minus 1. So we can say clearly, it is clear now, the coefficient, the binomial coefficient of x raised power n in the binomial coefficient, in the binomial expansion of 1 plus x raised power 2n is twice that of the binomial coefficient of x raised power n in the expansion of 1 plus x raised power 2n minus 1. ठीक है बेटा, ये आपने समझा, तो इसको आप टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हो क्वेश्चन क्या है इसका, बेसिकली क्वेश्चन क्या है वो मैंने लिखा है यहाँ पे. यू सिंपली यू हैव टू प्रूव द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ पावर n in 1 plus x raised power 2n is twice that of coefficient of x raised power n in 1 plus x raised power 2n minus 1. ठीक है, सो ये यहाँ पे हमने प्रूव किया. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज हियर, question is you have to find question is here, you have to find the value of m, positive value of m, for which the coefficient of x square in 1 plus x raised power m is 6. It is question number 12, last question of the exercise. Very important question. Question is find the positive value of m for which the coefficient of x square in 1 plus x raised power m is 6. It is given that the coefficient of x square in the binomial expansion of 1 plus x raised power m is 6, and you have to find the positive value of m. So in order to find this, we can find coefficient of x square, and in order to find the coefficient of x square, we need to write the general term, and we know that here general term is t of r plus 1 is equal to mcr x raised to power r. Therefore, coefficient of x raised power r is mcr. So coefficient of x square is mc2. This is coefficient of x square. But it is given that mc2 is equal to 6. Means coefficient of x square is in the binomial expansion of 1 plus x raised power m is 6. mc2 is 6. What is this mc2? This is m factorial divided by 2 factorial into m minus 2 whole factorial, which is equal to 6. This m factorial can be written as m into m minus 1 into m minus 2. As we know that this factorial is a continued, m factorial means the continued product of m natural numbers, m positive integers, divided by 2 factorial into m minus 2 whole factorial, cancel, is equal to 6. So simply it is, and 2 factorial is 2 into 1 into 0 factorial, and 0 factorial is 1. So it is m into m minus 1 divided by 2 is equal to 6. So you can find m square minus m is equal to 12, or you can write it as m square minus m minus 12 is equal to 0. Now you have to find the value of this m square minus m. Here we can write the value, we can find the value of this m from the quadratic equation. M square minus m minus 12 is equal to 0. This is a quadratic equation, and we can solve this by either by quadratic formula or by splitting the middle term. So we can write m square minus 4m plus 3m minus 12 is equal to 0, because minus 4m plus 3m, that is m, minus 4 into 3 minus 12 into leading coefficient, that is minus 12 into 1, that is 12, 4 minus 4 into 3, that is minus 12. So ये balance हुआ यहाँ पे. So we can write here m common, m minus 4 plus 3 common, m minus 4. So it is m plus 3 into m minus 4 is equal to 0. Either m plus 3 is equal to 0 or m minus 4 is equal to 0. When I write m plus 3 is equal to 0, m is equal to minus 3.
and when I write m plus 4 is equal to 0, we can say m is equal to 4. When I write m minus 4 is equal to 0, we can write m is equal to 4. But this m is equal to minus 3, it is here rejected. Why? Because it is given that we have to find the least, we have to find the positive value of m. So m is equal to 4. So this is the value of m, for which the coefficient of x square in 1 plus x raised power m is 6. तो बेटा ये एक्सरसाइज थी इसके रिलेटेड, बाइनोमियल एक्सपेंशन के रिलेटेड, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, इसके इक्वेशंस। बेटा अगर कोई असाइनमेंट रह गया हो तो आप कर सकते हो बेटा, अच्छे से कर सकते हो आप। मेरी जो लेक्चर्स हैं उनको आप अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा इट वाज ऑल अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो जो नेक्स्ट यूनिट होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी 11th क्लास के लिए। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए इंशाल्लाह आप अच्छे से रहे, इस पर आप गौर कीजिए, ठीक से रहे आप। थैंक यू।